जन्नत लर्निंग की डिजिटल क्लास में खुश आमदीद। ये वीडियो वर्चुअल यूनिवर्सिटी कोर्स इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS 201 लेक्चर नंबर 9 फंक्शन C++ के लिए है। हमें उम्मीद है कि आपके लिए ये मालूमाती और मददगार साबित होगी। बराए मेहरबानी जन्नत लर्निंग को सब्सक्राइब करें अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है। आपकी राय हमारे लिए इंतहाई काबिल सिताइश होगी। फंक्शन की दो टाइप हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस C++ में पहले से तयशुदा बिल्ट उन फंक्शंस को लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहा जाता है। वो पहले से ही C++ लाइब्रेरियों में लिखे हुए हैं, जैसे IOStream, CMath वगैरह। हम ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़र के ज़रिए तख्लीक करदा फंक्शंस जो हम अपने प्रोग्रामों में डिक्लेयर और लिखते हैं वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं। ये हमारी स्टडी का मौजू है और हमें यूज़र डिफाइंड फंक्शन को एक्सप्लोर करना है। फंक्शन कोड का एक ब्लॉक है जो एक मखसूस काम अंजाम देता है। फ़र्ज़ करें कि हमें सर्किल बनाने और इसे कलर करने के लिए एक प्रोग्राम की ज़रूरत है। इस मसले को हल करने के लिए हम दो फंक्शन बना सकते हैं। कलर ड्रा करने का फंक्शन, दायरे को रनने का फंक्शन। एक पेचीदा मसला को छोटे हिस्सों में तकसीम करना हमारे प्रोग्राम को समझने में आसान और दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाता है। A minimal function declaration consists of the return type, function name, and parameter list, which may be empty, along with optional keywords that provide more instructions to the compiler. This is the example of function declaration. A function definition consists of a declaration plus the body, which is all the code between the curly braces. ये फंक्शन डिक्लेरेशन है जिसमें रिटर्न टाइप फंक्शन का नाम और पैरामीटर की लिस्ट है। फंक्शन का नाम स्क्वायर है, रिटर्न टाइप INT है और आप पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स कह सकते हैं कि वेरिएबल का नाम नम है और वेरिएबल की टाइप INT है। फंक्शन का बॉडी करली ब्रैकेट के अंदर है जो नंबर के स्क्वायर का हिसाब लगाता है और प्रोग्राम फंक्शन स्क्वायर को आर्ग्यूमेंट्स के साथ कॉल करता है जो यूज़र इनपुट होते हैं। प्रोग्राम आउटपुट दिखाता है। आप प्रोग्राम कोड दोबारा देख सकते हैं। ये फंक्शन डिक्लेरेशन रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और पैरामीटर की लिस्ट पर मुश्तमिल है। फंक्शन का नाम स्क्वायर है, रिटर्न वेरिएबल INT है और पैरामीटर आर्गुमेंट्स की लिस्ट में वेरिएबल का नाम नम है और वेरिएबल की टाइप INT है। फंक्शन का बॉडी करली ब्रैकेट के अंदर है जो नंबर के स्क्वायर को कैलकुलेट करता है। यूज़र इनपुट नंबर्स एंटर करता है और प्रोग्राम स्क्वायर फंक्शन को आर्गुमेंट्स के साथ कॉल करता है और आउटपुट स्क्रीन पर दिखाता। Here we have a program code to calculate the shipping charges for cargo company. This function declaration consists of the return type, function name, and parameter list. Return type is int. Name of the function is ship charges. There are two variables in the parameter or arguments list. The variable name is dest, and the variable type is a string, and the variable name is weight, and the variable type is int. The body of the function is inside a curly bracket, which processes the calculation for the shipment cargo charges based on the destination city. Program uses three different rates conditionally: LHE, KHI, and RWP. The program uses using do while and while loop for options, and also switch statements. Please go through it and enjoy learning.
Thank you for attending the Jannat Learning Digital class. Our mission is to help you achieve academic success and unlock your potential. Our content includes study tips, exam preparation strategies, course overviews, and more. Join our community of motivated learners. Subscribe to Jannat Learning for regular updates and valuable insights. Good luck and goodbye.